नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है गाइस आपके अपनी चैनल KFCS पर। तो गाइस आज जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, ऑफ कोर्स यहाँ पे वर्ल्ड कप के जो है प्रिपरेशन चल रही है, टीम्स प्रिपेयर कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे वर्ल्ड कप प्रैक्टिस मैचेस से रिगार्डिंग आज बातचीत करेंगे कि आज के दिन क्या हुआ। इंडियन टीम इंडिया वर्सेस इंग्लैंड जो कि बहुत ज़्यादा होपफुल थे कि एक अच्छा गेम होगा, तो थोड़ी एक सेटलमेंट होती है इंडियन टीम की। सोच विचार करते हैं कि इंग्लैंड की टीम जब हम खेलेंगे तो इंग्लैंड की टीम कैसी है, एक स्ट्रैटेजी बनाने की कोशिश होती है। ये हालाँकि देखिए जो प्रैक्टिस गेम्स होते हैं उसमें थिंकिंग ऐसी होती नहीं है, सोच ये होती है कि आप कितना अपने को प्रिपेयर करते हैं। बट एज़ एन इंडियन और काफ़ी रिपोर्टर्स भी ये सोच रहे थे कि आज अगर इंग्लैंड से गेम होता तो, क्योंकि इंग्लैंड में जब हम खेलने जाएँगे इंग्लैंड के साथ, तो कैंपेन के दौरान एक पता रहेगा कि कौन से प्लेयर जो है बेटर खेल रहे हैं, उनके अगेंस्ट क्या हो सकता है, किस तरह की प्लेइंग 11 बनाई जा सकती है। सो उस टाइप की स्ट्रेटजी बनाई जा सकती थी। बट अनफॉर्चुनेटली जैसे कि कल गेम हुआ, अ, कल गेम तो बहुत अच्छा हुआ था गुवाहाटी में, बट अनफॉर्चुनेटली जो है इस बार नहीं हो पाया। और आज बारिश ने बहुत ज़्यादा खलल दिया और कहीं न कहीं हमें ये देखना होगा कि वर्ल्ड कप में मेबी कहीं मौसम बदल जाता है, तो उस वक़्त किस टाइप के प्रिपरेशन इंडियन टीम के ऑफ कोर्स, और इंडिया के कोने-कोने में मैचेज़ होने हैं। और जिस तरह से हमने लो क्वालिटी देखी, जिस तरह से हमने श्रीलंका में हमने देखा किस तरह से पूरा ग्राउंड को कवर करते थे, और ग्राउंड को बहुत जल्दी प्रिपेयर करना एक बहुत बड़ी चीज़ होती थी। वहाँ के ग्राउंड्समैन ने बहुत अच्छा वर्क किया था एज़ कम्पेयर टू इंडिया। बट जब यहाँ इंडिया के मैचेज़ हुए हैं, हमने देखा कि जब रिपोर्ट्स में पढ़ रहा था तो मैं देखा वहाँ पे वो बोल रहे थे कि 2 से 3 घंटे का समय लगेगा। जहाँ हालाँकि इससे भी कम समय लग रहा था श्रीलंका में, वहाँ पे रेनफॉल था। तो आई थिंक जो कंडीशंस के अकॉर्डिंग ग्राउंड स्टाफ भी उतने ज़्यादा एक्टिव नज़र नहीं आए, जो कि एक कंसर्न है। हालाँकि जो वेन्यू जिस वेन्यू पे हो रहा है, और इंडिया में कहते हैं अक्टूबर में जो है बारिश बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, बारिश होती नहीं है। बट हो सकता है अनसीज़नल कभी भी रेनफॉल आ सकती है। तो अगर इन केस रेनफॉल आती है तो ये बहुत बड़ा कंसर्न है कि इंडियंस पिचेस में जो है ग्राउंड्समैन उतने खास तैयार नहीं है। हालाँकि ये सारे ग्राउंड की कहानी नहीं है, कुछ ग्राउंड्स की है, लेकिन रियलिटी है ये। और कहीं न कहीं ये प्रैक्टिस गेम बड़े टीम्स के साथ-साथ छोटी टीम्स को भी थोड़ा इम्पैक्ट करता है। कहीं न कहीं आप कह सकते हैं जैसे नीदरलैंड की टीम है जो इकलौती टीम है जो खेल रही है। नीदरलैंड को ज़्यादा मौके भी नहीं मिलते हैं, बट आप उनको उतना टाइम दे भी नहीं रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा कंसर्न है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ग्राउंड्स को प्रिपेयर जल्दी करना चाहिए, इंडियंस को थोड़ा-सा मतलब अपने को सोचना चाहिए। एंड आई थिंक बीसीसीआई के पास इतने हैं, इतना अमाउंट है, सबसे अमीर बोर्ड कही जाती है। तो इस तरह की चीज़ें इंश्योर कर सकते हैं कि इंडियंस पिचेस पे कभी भी ऐसा हो तो ग्राउंड स्टाफ के पास वो टेक्नोलॉजी अवेलेबल हो, जिससे कि जल्द से जल्द ग्राउंड को आप कवर कर सकें, ग्राउंड जल्दी से मैच स्टार्ट हो सके। और मैं समझता हूँ कि रेनफॉल कितना भी था, आपको थोड़ा सोच विचार करना ही पड़ता है, क्योंकि आप अगर इस तरह से नहीं सोचेंगे तो मैं समझता हूँ कि ये क्रिकेट के लिए भी अच्छा नहीं होता है। क्योंकि जब आप ग्राउंड प्रिपेयर करते हैं, एक अच्छा मैच होता है, क्योंकि लोग मैच देखने ही आते हैं। और अगर मैच नहीं होता है तो बहुत ही दुःख की बात होती है। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है, और इस चीज़ को समझना भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं समझता हूँ इस चीज़ का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, और मुझे लग रहा है ये प्रैक्टिस गेम में वो मज़ा नहीं आया, जो कि कह सकते हैं कि एक एक्साइटमेंट होती है कि बिल्कुल कि हम एक मैच होगा, मैच देखने को मिलेगा, वो एक्साइटमेंट ख़त्म कर दिया इस गेम ने। तो कहीं न कहीं मैं समझता हूँ कि ये जो वर्ल्ड कप का प्रैक्टिस मैच है ये होना चाहिए। और प्रैक्टिस गेम जो है जब नहीं होता है तो ये बहुत ही ज़्यादा दुःख की बात है। तो जो भी कोई जुड़ना चाहता है हमारे साथ बातचीत करेंगे। फिर भी आज जितना भी गेम हुआ, आज बहुत ही बहुत सारी चीज़ें जो बात करने की है। सबसे पहले बातचीत हम करेंगे प्रैक्टिस मैचेस, जिसको मतलब रेन की वजह से जो है प्रैक्टिस गेम्स नहीं हो पा रहे हैं। सो इसके बारे में पूरी बातचीत करेंगे। तो हमारे साथ है कृष्णा नायर। हेलो। हेलो कृष्णा, कैसे हैं आप?
हाँ, मैं मस्त हूँ कुणाल, आप कैसे हो? बढ़िया। तो कृष्णा जी आज का जो टॉपिक है बेसिकली बातचीत करेंगे हम जितना भी गेम हमें देखने को मिला। हालाँकि मुझे बहुत दुःख हुआ देख के कि आपका एक वर्ल्ड कप का प्रैक्टिस गेम है और आपके ग्राउंड्समैन जो हैं अ, श्रीलंका में जिस तरह के हमने ग्राउंड्समैन देखे उन्होंने बहुत जल्दी ग्राउंड को प्रिपेयर कर पा रहे थे। बट हमारे इंडियंस जो है ग्राउंड को प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं। हमने देखा गुवाहाटी का आज गेम था। रेन बहुत पहले जा चुका था लेकिन 2 घंटे बाद भी आपका पिच तैयार नहीं हुआ और थोड़ी-थोड़ी बारिश भी हुई। कृष्णा क्या प्रॉब्लम है ऐसे इंडियंस में? मतलब पूरा ग्राउंड भी कवर नहीं कर पाते हैं, 60% ग्राउंड कवर होता है और प्रिपेयर करने में कम से कम 2 घंटे लग जाते हैं। श्रीलंका में तो ऐसा नहीं है। जी बिल्कुल कुणाल, ये सर्विस बहुत खराब है बीसीसीआई का। इतना रिच बोर्ड है बीसीसीआई, फिर भी तुम ग्राउंड रेडी नहीं कर पा रहे हो इतना फटाक से, क्योंकि और श्रीलंका में तो लोग ने वो क्या बोलते हैं उसको, ब्लू शीट्स डाले थे कवर करने के लिए। और इधर तो इतने सारे फैसिलिटीज रहते हैं कवर करने के लिए, तो भी ग्राउंड को तुम तैयार नहीं कर पा रहे हो मैच के टाइम तक। और कहीं न कहीं देखिए आज ग्राउंड्स के बारे में बातचीत क्यों हो रही है? क्योंकि मुझे पता है कि देखो सीज़न जो है इंडिया का अक्टूबर-नवंबर में रेनफॉल बहुत कम होता है। लेकिन ऐसी गारंटी हम नहीं दे सकते कृष्णा कि रेनफॉल होगा ही नहीं। रेनफॉल हो सकता है, बट आपके ग्राउंड्समैन जो हैं थोड़े-से चुस्त-दुरुस्त होना चाहिए, जो कि अवेयर होना चाहिए कि हाँ, यहाँ की कंडीशन ऐसी है, तो मेरे को इस तरह से ग्राउंड को कवर करना है कि जल्द से जल्द गेम स्टार्ट हो जाए। कृष्णा आप ये सोचो अभी जो ऑस्ट्रेलिया का गेम था, तेज़ बारिश आई, उन्होंने कहा अब ये ग्राउंड प्रिपेयर ही नहीं हो पाएगा। मतलब पहले ही हथियार डाल दिए कि मतलब आगे का गेम तो हो ही नहीं सकता अब, सीधे कॉल्ड ऑफ कर दिया। तो ये सारी चीज़ें क्या लगता है कृष्णा इन चीज़ों से क्वालिटी ऑफ क्रिकेट खत्म हो जाएगी? मतलब बारिश हुई तो मैच समाप्त, कोई चांस ही नहीं आगे। जी, और ये बारिश भी अजीब चीज है, मतलब ऐसा वार्म अप मैचेस जिधर पहले से ही वो लोग, जिधर बारिश नहीं हो रही है उधर करना चाहिए था। पहले ही वो लोग वेदर चेक करके जिधर बारिश नहीं हो रही है उधर ही वार्म अप करना चाहिए था। बिल्कुल जैसे वो भी कर सकते थे और एक तरीका और मुझे नज़र आता है कि मतलब जैसे अब आपके वार्म अप मैचेस हैं, ठीक है? सपोज़ आपको हम्म पता है रेन बहुत ज़्यादा हो रही है, क्यों नहीं अभी आपने आगे के जैसे अभी फर्स्ट डे रेन हुआ, आप आगे के प्रैक्टिस गेम्स को आप रीशेड्यूल कर सकते थे, आप उसको लखनऊ शिफ्ट कर देते, आप उसको अ, उड़ीसा में शिफ्ट कर देते। हमारे यहाँ मैदान की कहाँ कमी है, आप करा सकते हैं। और कितना टाइम लगता है एक से दूसरी जगह जाने में, अगर शेड्यूल करना चाहें तो। क्या बोले आप कुणाल? मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब सपोज़ फर्स्ट डे हुआ, फर्स्ट डे पता था तिरुवनंतपुरम में मैचेस नहीं हो पाएँगे। इनफैक्ट अभी तिरुवनंतपुरम में इंडिया को खेलना है प्रैक्टिस मैच, मेरे को उसकी भी कोई गारंटी नहीं नज़र आती कि वो खेल पाएँगे। तो कृष्णा आपको नहीं लगता कि चलो इंडिया, इंग्लैंड, बांग्लादेश सबकी छोड़ देता हूँ, नीदरलैंड जैसी टीम जिनको मौके बहुत ही कम मिलते हैं, हम इन्हें वर्ल्ड कप में देख पाते हैं। इनको तो कोई बुलाता भी नहीं है, शायद वो ये छोटी-मोटी कंट्रीज़ में खेलते रहते हैं आपस में एसोसिएट नेशंस के बीच। बड़े नेशंस के खिलाफ जब खेलने का टाइम आता है, तो दुःख होता है नीदरलैंड जैसी टीम के लिए कि ऐसे टाइम पे उनके शॉर्ट मैचेज़ होते हैं, वो भी कब कंप्लीट नहीं होता है और बारिश आ जाती है। तो इस पे आपका क्या कहना है? मतलब ये मतलब आपने क्या बोला? नीदरलैंड की मैं नीदरलैंड टीम की बात कर रहा हूँ, मैं मतलब ये कह रहा हूँ जैसे नीदरलैंड एक ऐसी टीम है जिनको मौके नहीं मिलते बड़ी टीम के साथ खेलने का जैसे इंडिया, ऑस्ट्रेलिया। सो आपने जब प्रैक्टिस गेम निकाला इन टीम्स के लिए कि हमको खेलना है और नीदरलैंड के 2 बड़े गेम्स थे, एक ऑस्ट्रेलिया से और एक इंडिया से। अगर आप सोचो ये रेन हीट हो जाए, दोबारा से रेन हो जाए, तो ये टीम बिना प्रिपेयर हुए वर्ल्ड कप जाएगी क्योंकि वर्ल्ड कप से पहले इनको कोई गेम नहीं मिला, कोई प्रिपरेशन नहीं, ठीक है? अब आप इनको प्रैक्टिस मैच भी नहीं खिलाओगे, तो एज़ अ रिज़ल्ट क्या निकलेगा रिज़ल्ट? अल्टीमेटली ये बड़ी हार होगी इनकी वर्ल्ड कप में। वर्ल्ड कप में ये शायद 1 से 2 मैच जीत पाएँ मुश्किल से। सो कृष्णा आपको नहीं लगता हमारे क्रिकेट की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए भी ये ज़रूरी है कि रेन इफ़ेक्टेड मैचेस को क ट्राई किया जाए कि मैचेस हों। ऐसा ना हो कि हैवी रेन है तो मतलब अब तो हो ही नहीं सकता, कुछ नहीं हो सकता, छोड़ो। ऐसा सिचुएशन नहीं होना चाहिए। आपको क्या लगता है इस बारे में?
जी कि कुणाल की नेदरलैंड्स जैसी टीम, क्योंकि आज भी अगर देखे तो नेदरलैंड्स ने कुछ बैटिंग से तो खेला तो अच्छा नहीं, मतलब सामने तो ऑस्ट्रेलिया थी, 66 फॉर 7 थे। वैसे भी नेदरलैंड्स तो हारने ही वाले थे अगर मैच पूरा हो जाता तो भी। तो ये मैं कह, क्योंकि नेदरलैंड्स आज बच गया हार से, वार्म अप का हार से आज बच गया। तो सबको मालूम है नेदरलैंड्स वैसे भी वर्ल्ड कप में एक दो मैच ही जीतने वाला है, क्योंकि बाकी जो टीम है, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, वो तो नेदरलैंड्स को तो आराम से हरा देगा मुझे लगता है। तो नेदरलैंड्स तो मुश्किल से एक दो मैच ही जीत पाएगा वर्ल्ड कप में। कि ऐसा सबको लगेगा कि नेदरलैंड्स एक दो मैच जीत जाएगा, लेकिन मुझे लगता है नेदरलैंड्स एक भी मैच नहीं जीतेगा, वो सब सब कंट्रीज के सामने हार जाएगा, जैसे कि बात श्रीलंका हो गए। अ, बात हारने की वे नहीं है, बात है मैचेस देने की। मतलब जब आप मैचेस नहीं दे पाते तो ये बहुत ही अच्छा नहीं लगता है देख के। मैं समझता हूँ यार, मैं समझता था कि श्रीलंका में अगर आप इस तरह के ग्राउंड्समैन है जो कि ग्राउंड को प्रिपेयर कर सकते हैं, तो इंडिया में क्यों नहीं? इंडिया में तो बहुत रिसोर्सेज है। जी बिल्कुल कुणाल। और ये बीसीसीआई ने ऐसे स्टेडियम्स को चुना जिधर वेदर बारिश का हो, क्योंकि इधर ये वार्म अप मैचेस ज्यादा देखने कोई नहीं आता है, ज्यादा व्यूवरशिप भी नहीं मिलता है। तो अ, इसमें मतलब लोग को ज्यादा प्रेफरेंस भी नहीं है वही सब वार्म अप मैच देख के। तो बीसीसीआई ने जो जिधर जगह पे रखा है उधर बारिश गिर रही है, मतलब आपने इंडिया के मैच में भी देखा हो बारिश गिरी। और बांग्लादेश श्रीलंका के मैच तो पूरा हो गया, लेकिन पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच में भी बीच में बारिश आई थी। तो बिल्कुल, हाँ कृष्णा, कंटिन्यू। होप सो वर्ल्ड कप के समय में ओके। तो बारिश चली जानी चाहिए थी। हाँ कृष्णा। चली। हेलो कुणाल। हाँ हाँ, आवाज आ रही है, आप कंटिन्यू। नहीं, मैं बोल रहा था ऐसा अच्छा हुआ सबको मालूम पड़ा कि बारिश आ रही है वार्म अप में वर्ल्ड कप से जाने से पहले। अगर वर्ल्ड कप मैचेस में बारिश आ जाएगी तो वो सबसे बड़ा मतलब 2 पॉइंट्स जो है, जो टीम्स कमाना चाहते हैं वो गवा देगी। तो अच्छा है कि वार्म अप मैचेस में आ रहे हैं, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द टीम्स तो वर्ल्ड का प्रैक्टिस करके आए हैं ओडीआई फॉर्मेट। और सब टीम्स प्रैक्टिस करके आ चुके हैं ऑलरेडी। तो वार्म अप मैच खेलने का कोई फायदा नहीं, जैसे कि न्यूजीलैंड हो, न्यूजीलैंड ने तो ओडीआई सीरीज खेल के भी आई थी। और उन्होंने जो परफॉर्मेंस दिया पाकिस्तान के अगेंस्ट वार्म अप मैच में, वो तो लाजवाब था। विदाउट सऊदी बोल जो थे तो भी न्यूजीलैंड आराम से कंफर्टेबल जीत गया। तो सब टीम्स एक्चुअली प्रिपेयर करके आ रही है ओडीआई ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए। जैसे कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिसेंटली सीरीज खेल के आ रही है, और इंग्लैंड भी न्यूजीलैंड के साथ सीरीज खेल के आ रही है, और न्यूजीलैंड बांग्लादेश में भी जाके सीरीज जीत के आ रही है। तो मेजोरिटी ऑफ द टीम्स तो एशिया कप भी खेल के आ रहे हैं। तो प्रैक्टिस तो एक्चुअली सबका हो चुका है टीम का। तो ये लोग प्रैक्टिस मैचेस क्यों रख रहे हैं मुझे नहीं मालूम। कि शायद वो लोग मतलब जैसे कि पाकिस्तान हो, वो लोग नए 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 आए इंडिया में इतने सालों के बाद, तो वो लोग को भी जब प्रैक्टिस चाहिए सब इंडियन कंडीशंस में, इसके लिए। और नेदरलैंड्स और ऑस्ट्रेलिया के मैच में भी ऑस्ट्रेलिया के ऐसी किसी को रैंडमली बेच दिया था आज भी, इसके लिए। और वो लोग ने 23 ओवर्स का गेम रखा बारिश के कारण। तो मुझे लगता है अच्छा हुआ कि बारिश अभी आई है, और वो होप वर्ल्ड कप के मैचेस के टाइम पे बारिश ना आए, और वो वर्ल्ड कप टीम्स में 2 पॉइंट ना गवाए कोई टीम्स। Yeah, of course. Okay. So welcome, Rahul. How are you? Yeah, I'm good. Kunal, how are you? Yeah, okay. So Rahul, how you feel when you see the rain hitting the practice games and groundsmen are not be able to prepare a ground within half an hour? They are taking 2 and 3 hours, and still game is abandoned. First of all, one thing, Kunal, I'm not understanding one thing. Uh, you're having these practice matches. Why not have the practice matches in the same venues where the World Cup matches are going to take place? I don't understand. I think there is no need to have practice matches in Guwahati or Thiruvananthapuram. That doesn't make much sense to me. Pakistan had their match against New Zealand in Hyderabad, but that is fair because
Hyderabad is going to host some World Cup matches. Some World Cup Yeah, matches are very going to few. happen there. But where is the need for Gauhati or Trivandrum, Thiruvananthapuram to have practice matches when they are not going to host any World Cup matches at all? Because each venue in India is different, offers different condition type of conditions. So you might as well give the match to the teams, the practice to the teams in the venues where they are going to play their matches. In my opinion, India has so many venues and so many grounds. They can hold the practice. They don't need to limit the practice matches to certain venues. In my opinion. Yeah, but Rahul, how you feel when we see the Asia Cup in Sri Lanka, the way Asia Cup in the Asia Cup, the way Sri Lankan groundsmen prepare the pitches within half an hour. They are not taking so much time. Actually, they cover the whole ground. That is the reason. And India, what we see, almost 60% ground is covered, only they are covering the pitches. As a result, what we see, they are not be able to prepare a ground within 2 hours. Even they need more than 2 3 hours to prepare the ground. So how you feel, Rahul, now, as we all know that BCCI is one of the richest board, but still our Indian pitches are not ready as compared to Sri Lanka. Uh, yeah, I mean, it goes venue by venue. We need, but we should have many good venues Yeah. compared to other countries where we can host matches, and we should be able to overcome the rain issue, prepare the ground quickly. Being the richest board, we have the resources, and we can definitely spend that kind of money to keep the grounds in good shape. Yeah, of course. Now let's come to the match that has been happened. But what we see actually, Rahul, what happens to Australia when they comes to World Cup preparation or anything? They are suddenly looking like a champion. Means Stark hat trick, half century from Steve Smith, bowling from Marsh, Labuschagne also taking the wickets. Marsh is also rolling his arms. So how Australia is preparing? Yeah, Australia is preparing very well for the World Cup, in my opinion. I think they will be a big threat in this World Cup. They didn't do very well with the bat, but with the ball, they've really performed well. Yeah. So Krishna Nair, your views on Australian team, hat-trick from Stark, half century from Smith, and suddenly Michelle Marsh is also bowling. So this team has good all-rounders. Yeah, Krishna, you hear me? Okay. Yeah. Okay. No issue. So Rahul, how you rate the performance of Michelle Stark? First game, of course, for World Cup preparation and hat-trick. Yeah, great performance. Got a hat trick. Mitchell Stark has a way of performing in these big tournaments in the World Cup. He's one of the best one-day cricket bowlers going around. Even now, he may not be playing regularly ODI cricket regularly for Australia or playing every single match, but he knows when to peak. I Yeah. think that is quite a fantastic quality in a player, and they know So how to Rahul, peak in the big tournaments. so Rahul, when we see the Australian team, how many all-rounders are there now in numbers? Quite a lot, like five or six of them I'm seeing. Okay, Marcus Stoinis, Marsh, Green, all are fast bowling all rounder. Maxwell, they have Maxwell Maxwell is as your well. I think they're spinner. calling Sean Abbott an all-rounder as well, if I'm Yeah, not wrong. yes, Sean Abbott is batting good against India also. So when you have 5 6 all rounders and good fast bowling unit, Hazelwood, Stark, Cummins, Jampa as a leg spinner. Anything remains for Australia? Rahul, I think he has taken all the elements to India now. Uh, y- Nothing left. n- no, not much left. Hopefully, he'll perform this way during the World Cup as well. Hopefully, not against India, but in other matches. But I'm really fear, Rahul, when we see this Australian team practice matches. India, I don't think India will get a single practice match because again in Thiruvananthapuram we have to play with Netherlands. But Rahul, when we start the campaign from 8,
Do you think that Australia will come with different preparation? Well, Travis Head will join Australia in mid. So before that, there will be a Marsh. So Marsh, who can roll his arms, he's a good fast bowler and medium fast bowler and good opener also. So Rahul, do you worry about India that if Marsh and Warner goes on attacking mode of cricket and Smith, Labuschagne, it may cause some issue? Yes, it might cause some issue. I mean, this is a pretty dangerous top order still right now. If they get going, they can be dangerous for anyone on their day. So we cannot take them lightly, in my opinion. And yeah, hopefully we will be able to tackle them. Hopefully we can counter them on the Chennai pitch. We're playing in Chennai. It'll definitely be a spin friendly venue, so we can expect India to be able to counter Australia on that pitch, especially if we have Kuldeep Yadav in our bowling attack. Kuldeep Yadav, Ravindra Jadeja. RSL Jadeja plays for CSK in the IPL, so he knows the and home Chepauk ground of ground Ashwin also. in and out. So there is lots of home advantage going for India in this match. And it is home ground of Ashwin also. That is Yeah, also. absolutely. If you bring in Ashwin into the team, he can also be very dangerous. I think it is almost confirmed that Ashwin, Jadeja, and Kuldeep will play together in the first match. Yeah. So Yeah. Rahul, let's suppose if today game happened between India and England, what type of strategy you think that India missed today? Actually, they have to play against England. I think they need to see something whose batsman is performing against England team because England team have good fast bowling unit, good spinners as well, especially Adil Rashid leg spin, Moeen Ali off spinner. So do you think India missed that opportunity that before starting the campaign they must have some strategy against this England team? I'm sure they do have a strategy to face England. I'm very sure of that. Yeah, we missed out on match time against them, unfortunately, in Guwahati. But I think when we play them in the World Cup, the pitch in Lucknow, it's going to be very different from Guwahati. Guwahati, as far as I know, I think it'll be a little more pace friendly than Lucknow. Lucknow will be more spin friendly for Team India. Hopefully, in Lucknow, India will carry out their strategy for England. Last time, actually, India played England was in England, and actually in that series, the guy who really troubled England is not in this World Cup squad. Yuzvendra Chahal. Chahal didn't get selected in this World Cup squad. I still feel that's a big miss in this squad for Team India. Nevertheless, Kuldeep Yadav can also trouble England, in my opinion, and so can even Jadeja or Ashwin on the pitch in Lucknow. Yeah, of course. Okay, so now let's talk about World Cup point of view for Indian team preparation. Rahul, when we see in Hyderabad, Pakistan was playing, they are easily making a score of 350 odd runs. Okay, and I also heard from some commentators they are thinking that in Hyderabad, if 350 is possible from Pakistan team, suppose England team is playing and venues are making in that way. There were some rules. I hope you know also there was rules given that minimum 70 meter there will be a ground measurement that it not be less than 70, it must be at least 70 means if there is at least 70 there will be some grass in the ground. So these are the rules, but still Pakistan made it 350. So Rahul, can you expect well bigger so-called cricket analysts and other commentators are saying that it can't possible, but Rahul, 498 is the highest score of ODI that is made by England team. Do you expect any double hundred from a single player or 500 can be scored? Means 2 runs more. Maybe England again. Mm, 500, I don't think will be scored in this World Cup, most likely. That is a little bit asking for a little bit too much. Even for teams batting against Netherlands, like India against Netherlands or Australia against Netherlands, that kind of a matchup, even there, I don't see 500 happening. So
Most 400. likely 500 is not going to happen. Even 400, that will be doubtful in my opinion. Yeah, I'm not sure even 400 will be scored in any World Cup match in this tournament. But 350, you can definitely see a score of 350 being scored. In my opinion, 300 or 350, but 400 is going to be, even scoring 400 is going to be tough in my opinion. Let alone 500, because no teams are really pushovers like that. Because actually when we see the practice match, actually if Pakistan can make 350 runs in front of New Zealand bowling, well, New Zealand bowling was great. If we talk about Michelle Santner, they have good bowlers. Daryl Mitchell was there, his Sodi was there. So still, if Pakistan can make 350, then suppose how much England can make if there is this kind of pitches remaining. That's why there is question that 400 is possible. If Pakistan can make 350, then others team can do anything, anytime. Yes, absolutely. I think England would have definitely scored a lot on this ground. They would have got 380 or 390, in my opinion. If anyone can score 400, it'll probably be England, in my opinion. I don't even see Team India doing it, to be frank. Yeah, of course. So let's see how the team will there. But yes, prediction time, Rahul. I'm asking some prediction from you, not of a top four. I am asking for most run getter. Actually, this is a very you say very hard question. You can't pick one player, but I'm asking you at least two, three, four, five players that who can be the highest run getter in this tournament. That's an interesting question. I have a feeling it's going to be someone like Shubman Gill, in my opinion. I'm not even going to go with Rohit Sharma, because Rohit Sharma has kind of shown that in recent times that he's not able to convert his 50s into hundreds. That is the reason. Shubman Gill might score some big hundreds in this tournament because it's in India. So I'm giving an edge to Shubman Gill in this regard. Shubman Gill. Okay. Don't you think other openers like suppose Fakar Zaman is in a red hot form, Babar Azam, in England we will talk about Johnny Barristow is also attacking batsman, Devon Conway, uh, another batsman like Kane Williamson is there for Australia. There's Steve Smith, David Warner. Don't you think others have any chances? Well, David Warner plays in India regularly. In IPL, he is coming every year to play. Mm, yeah, they definitely have chances, in my opinion. I'm not going to rule it out, but Babar Azam, I'm I'm kind of ruling out because I feel like because he's not played in India before, he might struggle. Yeah, he scored a 50 during the practice match, but practice match is a bit different from regular match, in my opinion. So maybe not Babar Azam. It could even be someone like Joss Butler or Johnny Bairstow. David Malan is also a candidate, in my opinion. I wouldn't rule it out. Yeah, David Malan is also there. Joe Root is there. So those who player who is capable of playing spin can perform. Yeah. Okay. So Rahul, we know their highest wicket taker will be there, but how much wickets possible? Means highest in a tally can how much wickets they can take maximum 30, 35, 40. How much? Sorry. I'm asking, suppose a player is the highest wicket taker in the World Cup. I'm asking the number of wickets he's going to take. How much? 30, 35, 40. How much? I think it's going to be very challenging to say this, but I think the highest wicket taker will be a spinner, in my opinion. It's hard to really pick one in this case, but I think it's going to be Kuldeep Yadav, in my opinion, uh, who takes the highest wickets. I think I'm he'll get asking 30 numbers. wickets. 30 wickets. 30, 30 wickets. Okay.
Let's see, interesting choice. 30 wickets. I think in previous World Cup, I guess it was 27 or 28, right? I think Yes, so. It was around that, 27, yes, 28. Yeah. And in batting, I guess there was 600 from Rohit Sharma. 600 yeah, plus. 648 from Rohit Sharma. I forgot the number of wickets. Yeah. Yeah. 648 is there. Yeah, of course. Okay, there is one more award in World Cup also. There is a most valuable player award that is always goes to IPL. When we see always there is a award of most valuable player. So seeing all the nine teams, not I am including in Netherlands, who is according to you the most valuable player award winner? Can be possible. That's a very good question. My opinion. I would. I mean, to me, my thoughts always go towards an Indian player for some reason because I feel this is going to be India's World Cup, in my opinion. So I would go with Mohammad Siraj maybe to be the most valuable player. Mohammad Siraz. Okay. Yeah, great choice. Let's see and how the game will progress. So tomorrow, there is no practice game. So tomorrow we will come and let's see and let's talk about Asian Games also. So Rahul, when we see the hearding the news about Asian Games that India is getting medals regular intervals, I think this is the first time that India getting medals every day. So how you feel now for men's team? I think when they heard the news, that will definitely boost their confidence that they can win gold. Yeah, it's great for Indian sports seeing the amount of gold medals India is winning it all over the place, even defeating Pakistan in squash, defeating China in table tennis. It's quite amazing. Yeah, of course. So let's hope there will be a great match, and tomorrow there will be there we will talk about Asian Games. Which team is participating? We will try to make a playing 11 and make the Asian Games also really interesting because Asian Games is just I think it is of 3 days. One is qualify. I think there was quarter final in one day. Next day is your semi final and then final. Before World Cup, it will be campaign. So we will cover the Asian Games also. So tomorrow when we will come, Rahul, we will talk about the playing 11 of Sri Lanka, Bangladesh, India, and Pakistan. So that will be a very interesting discussion tomorrow. Yes, absolutely. Yeah, hope so. You will come at the same time. Yeah, yeah, yeah. Okay, so hope so. You will come tomorrow, and we will have a good discussion about their playing 11 because some interesting players are there in the squad of all the four teams. Yes, Yeah. absolutely. Yeah, so guys, nothing more today for discussion. I hope that there was a match between India, England, Australia. I think that Australia was in a great position. Means I was very happy see the hat trick of Stark. What a bowling! Yeah, I love it. absolutely. They should have won the match. Unfortunately, rain denied them. Yeah, it's okay, but there is a team Netherlands. But I think now Stark is back to confidence. That made me fear also that if suppose we anyhow manage to win the match against Australia, but when Australia come to semi-final, then what should we do at the semi-final or final? What should Indians will do if Stark will play like this? We all know Rahul, 2015 Stark, how he was performing in Australia was a final winner. The Yeah, margin was absolutely. Michelle Stark. Michelle Stark 27 wickets whole tournament. He was Yeah. dominating. Whether it was Australia condition, but I think if India is taking hat trick in World Cup preparation, so what he will do during World Cup? Just imagine Rahul. Yeah, I can imagine. I think he will have a good World Cup, in my opinion. I guess Pat Cummins and Rachel Wood are already informed. So one player that was finding his rhythm that was Michelle Stark. So let's see, and we will have a great discussion. Thank you, Rahul, for your time. Yes, And thank you. so in upcoming days, there will be a lots of excitement and hope so.
in Monday and Tuesday there will be some good practice games. No rain. Yes, absolutely. Yeah. Okay, so thank you, Rahul, for your time and have a great day. Yes, you too, Kunal. Thank you. Yeah. Bye. Yeah, thank you. तो गाइस ये थे डिस्कशन आज के गेम्स की। गाइस आज ज़्यादा बातचीत हुई नहीं क्योंकि गेम ज़्यादा हुआ नहीं, लेकिन जितना भी गेम हुआ मज़ा आया है। और थोड़ा सा मतलब स्टार्ट ने कलबली मचा दी है इंडियन टीम्स के दिमाग में, थोड़ा सा कलबली मचा दिया होगा यार। स्टार्क ना शानदार फॉर्म में चल रहे हैं और कलबली मचेगी भी। पाँच पाँच ट्रॉफी ली है ऑस्ट्रेलिया की टीम ने, तो देखते हैं कैसा रहेगा गेम। तो गाइस कैसा लग रहा है आप लोग को डिस्कशन, ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। और अ, अपने सुझाव ज़रूर देते रहिएगा और एंजॉय करिए वर्ल्ड कप के कवरेज को। सो लेट्स सी। और आपको कैसा लग रहा है हमारा नया सेटअप, इसके बारे में भी ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए मिलते हैं गाइस, कल बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन होगा। एशियन गेम्स के बारे में बातचीत करेंगे, कल कैसा क्या रहने वाला है इसके बारे में पूरी बातचीत करेंगे। और फिर अ, और एशियन गेम्स को भी हम बनाएंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि अब रोज़ इंडियन मेडल्स जीत रही है, तो क्यों ना इस चीज़ को सेलिब्रेट किया जाए और इंडियन टीम्स का जो है थोड़ा सा मनोबल बढ़ाया जाए। तो बात करेंगे कल एशियन गेम्स के बारे में। तब तक के लिए गाइस थैंक यू वेरी मच। जो भी मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। गुड बाय एंड गुड नाइट।